So good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Sir, Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. So today we will discuss examples, questions related to Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, and Cauchy's mean value theorem. So quickly revise what is Rolle's theorem. If a function f is continuous in closed interval ab, derivable in open interval ab, and f of a equal to f of b, then there exists c belongs to open interval ab such that f dash c equal to 0. So if we have a function like this is x-axis, this is y-axis. We have point A and B. So function is continuous. Function is continuous at in closed interval AB and derivable in open interval AB and f of A equal to f of B. So we can take all the three conditions. Then there exists a point C in between A and B. In between A and B, such that the derivative at that point is equal to 0. So we get a slope which is parallel to x-axis. F dash c equal to 0. This is one possibility. There are so many possibilities, but we take only one case. So whose mic is on? Mute your mic. So now let us discuss some examples. Verify Rolle's theorem for the following function. Functions in the indicated intervals and find C. First, f of x, the given function fx is equal to x square plus x minus 6 in closed interval minus 3 comma 2. Second, f of x is equal to sine 3x in closed interval 0 comma pi by 3. Third, f of x is equal to
x minus a की power m into x minus b की power n, where m and n belongs to natural number and x belongs to closed interval a comma b. And fourth part is f of x is equal to modulus of sin x in closed interval minus pi by 2 comma pi by 2 and f of x is equal to x plus 3 if x is less than equal to 2, 7 minus x if x is greater than 2 in closed interval 3 comma 7. So these are some questions. We discuss all these one by one. So we start with first. So given fx is equal to x square plus x minus 6, where x belongs to closed interval minus 3 comma 2. So f is a polynomial, right? So this implies f is a polynomial function. Since f is a polynomial function, and we know that every polynomial is continuous and differentiable or derivable in R, in real number R. So we can say, so first function f is continuous in closed interval minus 3 comma 2, because this is also a subset of R. Minus 3 comma 2 is a subset of R. If it is continuous in whole R, whole real line, so it is also continuous in the given interval. Second, f is derivable in open interval minus 3 comma 2. And what is the derivative of this? That is f dash x is equal to, yes, what is the derivative of fx? 2x plus 1. 2x plus 1. And f dash x is equal to 2x plus 1. Because this is important, so we put this in square box, rectangular box. So f dash x equal to 2x plus 1 exists.
in open interval minus 3 comma 2. Now, what is the third condition? F of X is F of A is equal to F of B. Yes. What is A here? Minus Minus 3. 3. So what is f of minus 3? It is minus 3 ka square. We put x equal to minus 3 in x square plus x minus 6. So minus 3 square minus 3 minus 6. So it is 9 minus 9. It is equal to 0. What is f of 2? 4 plus 2 minus 6. 4, how we get 4? 2 ka square, right? So 6 minus 6, this is equal to 0. So this implies f of minus 3 equal to f of 2. Since f satisfies all the three conditions, or we can say all the conditions of Rolle's theorem, thus by Rolle's theorem there exists what we get, there exists C. C belongs to, Open interval A. and what is A and B here? Minus 3 comma Minus 2. 3. So C belongs to open interval minus 3 comma 2 such that f dash C equal to 0. F dash C equal to 0. So let this be 1, right? इसको हम 1 लेते हैं because this is important. Now if we put x equal to C in 1, what we get? F dash C is equal to 2C plus 1. So we can use equation 1. So I can write 2C plus 1. This implies 2C plus 1 equal to 0 by using 2, by using 1. So this implies 2C equal to minus 1. This implies C equal to minus 1 by 2. And given interval क्या था? Given interval is, this is our real line. This is minus 3. This is 2. And we have to find C in minus 3 and 2 के बीच में find करना है. So open interval minus 3 comma 2. And now we have find C equal to minus 1 by 2. And this is minus 1 by 2. So it lies between, this is our C. This is A, this is B. तो C कहाँ belong कर रहा है? This belongs to minus 3 comma 2. Right? So we have to find C. So we can find C equal to this. Hence, Rolle's theorem verified. So quickly take 30 seconds and revise this part.
Okay, so come to second. What is second question? F of x is equal to sine 3x. So f of x is equal to sine 3x. X belongs to closed interval 0 to pi by 3. So we start the solution. Even we can write given f. Since fx f of x is equal to sine 3x is a trigonometric function. And we know that sin x is continuous and derivable for all x belongs to R. For all x belongs to R. So this implies first point fx is equal to sine 3x is continuous in closed interval 0 comma pi by 3. Second, fx is equal to sine 3x is derivable in open interval 0 comma pi by 3. So what is the third condition? F of A is equals to F of B. F of A equal to f of b. So what is f of A here? 0. F of 0, that is equal to sine 0, right? So sine 0 equal to 0. 0. And f of b is f of pi by 3, that is sine 3 pi by 3, that is equal to sine pi, and we know that sine pi is also equal to 0. So f of A equal to f of b. So f of 0 is equal to f of pi by 3. So function satisfy all the three conditions of Rolle's theorem. Since f satisfies all the conditions of Rolle's theorem, therefore by Rolle's theorem there exists C belongs to C belongs to Open interval A. 0 comma pi by 3. such that
such that f dash equal to 0. Okay. So it's better if we find the derivative here, right? तो यहाँ हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसका f dash x is equal to, what is the derivative of sin x? Sin 3x? Three, 3 three cos cos 3x. of 3x. 3 cos of 3x, and we write this as equation number 1, and this exists. We write this exists in open interval 0 comma pi by 3, and let this be equation number 1. So now from equation 1, f dash c equal to, what if we put x equal to c, what we get? 3 cos 3c, this is equal to 0, because f dash c equal to 3 cos 3x 3c by using 1. So 3 is not equal to 0, so what we get? Cos 3c equal to 0. Now tell me cos 3c equal to 0, and we have to find the point between 0 to pi by 3. 0 to pi by 3 means 0 to 6c. Which value gives cos 3c equal to 0? Cos कौन सी value? Pi by? Pi by 2. Yes. So cos 3c equal to, हाँ यहाँ हम बिट पाई बाय 2 तो लिखेंगे, बट वी नो दैट cos ऑफ 2n plus 1 pi by 2 for all n belongs to all n belongs to z. Cos 2n plus 1 pi by 2, this gives us 0. Odd multiple of pi by 2. N belongs to integer. So even for all n belongs to integer. So it means if we compare, we get 3c equal to 2n plus 1 pi by 2 for all n belongs to z. So this implies that c equal to 2n plus 1 pi by 6 for all n belongs to z. Integers क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. So if we put n equal to 0, so here you can write, n equal to 0 plus -1 plus -2 plus -3. These are integer, right? So if we put n equal to 0, we get pi by 6. If we put n equal to 1, we get 3 pi by 6 or pi by 2. If we put n equal to -1, then we get minus pi by 6. So similarly, you get all the other values, n equal to 2, 3, and so on. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? 0 to pi, c कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 to pi by 3, और 0 to pi by 3 में सिर्फ इनमें से एक ही वैल्यू है, that is pi by 6. बाकी pi by 2 minus pi by 6, these all does not belongs to given interval. So this implies that c equal to pi by 6 belongs to open interval 0 comma pi by 3. Hence Rolle's theorem verified.
You can also plot the graph of sin x and sin 3x. कि लास्ट स्टेप आपको समझ आया, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Quickly take 30 seconds and revise this. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will discuss another question. Okay, so now next is given fx is equal to, what is fx now? X की पावर X minus a x raised minus to a की पावर m, x minus a की power m x minus b की पावर n into मल्टीप्लाई x बाय minus b की power m, where m comma n belongs to natural number and x belongs to closed interval ab. So they are polynomial, right? X minus a की power m, m is a natural number, so it is a polynomial. X minus b की power n is also a polynomial, and product of two polynomial is again a polynomial. So we directly write, because since f is a polynomial function, and we know that every polynomial is continuous and derivable for all x in R. Therefore, what is the first condition? What we get? fx is continuous in closed interval ab. Yes, so we can write fx is equal to x minus a की power m, x minus b की power n is continuous in closed interval ab. Second, fx is equal to x minus a की power m, x minus b की power n is derivable in open interval ab. That is, what is the derivative of this? F dash x
Yes, quickly tell me what is the derivative of this? M X mx minus minus. We apply the product rule, right? Yes, sir. So M M X minus A और उसके पावर M minus 1 और second as it is. yes, yes, tell me. So is it correct or not? F dash x equal to this. We apply the product rule. So what is my next step? Anyone? We can take x minus a की power m minus 1 and x minus b की power n minus 1 to be common. And we get m into x minus b plus n into x minus a in bracket. Is this step clear to everyone? Yes, sir. Okay. So we can write this is equal to x minus a की power m minus 1 into x minus b की power n minus 1. So I can write mx minus mb plus nx minus na. If we take combine the terms of x, then we get m plus n into x minus na plus mb. Yes, can we write like this? So we Yes, get sir. f dash x equal to this, and this exists. This exists in open interval a comma b. Okay. For all x belongs to, we can write for all x belongs to open interval a comma b. So let this be equation number 1. Or because it is important, so we can also keep this in rectangular box. And now what is the third condition? f F of of a A equal equals to F of B. What is f of a? Here a is again a, right? A is because it is general, x equal to a. Now if we put x equal to a, fx में यहाँ x की जगह a पुट करेंगे, a minus a is 0, any number multiplied by 0 equal to 0, so fa equal to 0. So for b, x equal to b, but we get f of b equal to, yes, tell me what is f of b? 0. 0. Yes, f of b is again 0. So I can write f of a equal to 0, that is equal to f of b. Is it fine? Yes, sir. So thus f satisfies all conditions of Rolle's theorem, thus by Rolle's theorem in closed interval AB. Even we can write in closed interval AB.
Thus, by theorem, we get, or there exists, C belongs to open interval AB such that f dash c equal to 0. अब क्या करेंगे इसके बाद? f dash c equal to 0. f dash c कहां से फाइंड करेंगे? From 1. From equation 1. So x की जगह c पुट करो, we get c minus a की पावर m minus 1, c minus b की पावर n minus 1 into m plus n into c minus na plus mb equal to 0. Now ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, c माइनस ए की पावर m माइनस 1 इंटू सी माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू द टर्म इन द स्क्वायर ब्रैकेट. इनमें से एक भी 0 होगी देन द प्रोडक्ट बिकम 0. लेकिन कौन सी इनमें से 0 है और कौन सी 0 नहीं हो सकती? yes. Can you फर्स्ट tell me? वाली फर्स्ट वाली नहीं होगी 0. फर्स्ट वाली c माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? C माइनस ए और C माइनस बी जो है ना, C जो वो ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में है. यस, वेरी गुड. बिकॉज c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो c a नहीं हो सकता, c b भी नहीं होगा. तो अगर c a और b नहीं है तो डिफरेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर कैन नॉट बी 0. So c minus a is not equal to 0. C minus b is not equal to 0. So we have only one possibility. What is that? That m plus n into c minus na plus mb must be 0. So this implies that m plus n into c minus na plus mb to be equal to 0. Because we can write the reason here. What is the reason? Because c belongs to open interval AB, so c is not equal to a and c is not equal to b. Therefore c minus a is not equal to 0 and c minus b is not equal to 0. Is it clear? Yes, sir. So now we have to find c from this equation. So what is c? C equal to na plus mb divided by m plus n. And now I write this belongs to open interval AB. Can you tell me how we can write this? How we know that this na plus mb upon m plus n belongs to open interval AB? बाय रोल्स थ्योरम. No. हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करवानी है, हमें सी बताना है कि ये ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए. लेकिन कैसे पता कि ये वाला फैक्टर जो है ए और बी के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए और बी में आ रहा है? Yes, anyone?
आप 11th क्लास में आपने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए और बी एक पॉइंट है और यू कैन टेक एक्स एंड वाई बी एनी 2 पॉइंट. If we divide these points into in the ratio m ratio n, then this point C, अगर ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और अगर बीच में हमें C पॉइंट फाइंड करना है या Z पॉइंट फाइंड करना है, ये Z है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? M को हम Y से मल्टीप्लाई करते थे, N को हम X से, तो Z के कोऑर्डिनेट हो जाते थे हमारे पास nx प्लस my डिवाइडेड बाई रेशियो जो था m प्लस n. इंटरनल जो सेक्शन जो फॉर्मूला था ना, सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है. सो हाउ वी कैन डिवाइड, इफ इट डिवाइड इंटरनली देन द पॉइंट z is equal to nx plus my upon m plus n. So by section formula we know that this belongs to open interval a comma. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So if we take x equal to a, now I write here in term of a and b. So what is my a and b? These are a and this is b. We have to find this c. So c is equal to n into a plus m into b divided by m plus n. If the points divide internally in the ratio m ratio n, this is the ratio m ratio n, then we can find the internal point c equal to na plus mb upon m plus n, and this belongs to open interval. So hence Rolle's theorem verified. So now the next question is fx equal to mod sin x minus pi by 2 pi by 2. So fourth is f of x is equal to mod of sin x, x belongs to minus pi by 2 comma pi by 2. So the derivation of mod x, can someone tell me what is the derivation of mod x? How we can differentiate modulus of x? Cos x. Modulus of x, derivative minus of, x if x is less than 0. so derivative of mod x is x upon mod of x, right, where x is not equal to 0. This is the derivative of mod x, right? So इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन लिखने से पहले वी ट्राई टू डिस्कस कि ये फंक्शन कैसा होगा. वी नो दैट mod x is not differentiable at x equal to 0 because mod x is not differentiable at x is equal to 0. कोऑर्डिनेट बनाता है. हाँ, बिकॉज इट x equal to 0 पे कॉर्नर बनता है एंड एट कॉर्नर पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, सो अब हमने देखना है कि एफ एक्स इक्वल टू
साइन एक्स, मॉड साइन एक्स। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन 0 इक्वल टू 0, साइन पाई इक्वल टू सो 0 टू पाई minus pi 2 pi minus 2 pi. So we know that sine 0 equal to 0 and sine function is lies between -1 to 1. Sine 1 कब होता है 90 के ऊपर, so it is pi by 2 minus pi by 2 फिर -1 ग्राफ इस तरीके से बनेगा। राइट, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन ऑफ x। लेकिन वी नो दैट मॉडुलस जो है, मॉड फंक्शन क्या करता है, मॉडुलस नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो हाफ है, अगर आप इसको देखोगे, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो मॉड इसका पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज y जो है यहाँ पर, y पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 टू इन्फानाइट। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस आई कैन make this in by green color, this green color part, this ये नेगेटिव है, और नेगेटिव को जब मॉडुलस हम अप्लाई करेंगे तो इट बिकम पॉजिटिव। नाउ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन लुक लाइक्स, जब मॉड लेंगे हम तो मॉडुलस में द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स इज इट बिकम लाइक, देखो ये -2 पाई से -पाई वाली लूप तो एज इट इज रहेगी, इट लुक लाइक दिस ऐसे। लेकिन जो -पाई से 0 वाली लूप है, ये दिस वन, ये वाली लूप, ये क्या होगी, ये पूरा कर्व जो है वो शिफ्ट होगा अपर साइड को। सो इट बिकम दिस टाइप, राइट। एंड 0 टू पाई नेक्स्ट, ये सेम एज इट इज, बिकॉज ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इट रिमेन सेम। और नेक्स्ट चेंज किस में आएगा, जो नेगेटिव है वो इट बिकम, तो हमें कुछ इस तरीके से आगे ग्राफ जो है इसके मिलना शुरू हो गया। So this is the graph of y equal to mod sin x. Is this point clear to everyone? Yes, sir. Yes. Now अब देखो, हमें फंक्शन ये तो जनरल हो गया, पूरे रियल नंबर के ऊपर हो गया, लेकिन हमें फंक्शन कहां से कहां तक दिया, -π/2। तो मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ, देखो पहले ग्राफ प्लॉट करता हूँ।
ये मेरा -π/2 और ये +π/2 और ये 0 आ गया। यहाँ 1 लेते हैं और यहाँ पर -1। मैं सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाऊंगा जितना हमें बोला गया। अब देखो -π/2, ये -π/2 पे ये वैल्यू थी, ठीक है, ये -π/2 है, इस पे ये वैल्यू थी। अब जब शिफ्ट हुआ तो ये वैल्यू यहाँ आ गई थी, ये -π/2, ये -π/2 और +π/2 पे ये वैल्यू थी, तो +π/2 पे तो सेम ही रही ये वैल्यू, तो आई कैन राइट दिस। तो जो ग्राफ मेरा बनेगा वो सिर्फ ये वाला बनेगा। देखो यहाँ से शुरू होके ऐसे और ये ऐसे इतना सा ग्राफ, ये -π/2 और +π/2 के बीच में लाइक। अब मैं इसको यहाँ प्लॉट करता हूँ, ये -π/2 पे -1 तो और π/2 पे भी 1 बन गया। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लिया हमने, अगर मॉड नहीं होता तो -1 होता। Now this graph is look like this is the graph of this function। ये किसका है? मॉड sin x का। लेकिन कहाँ पर? इन इंटरवल -π/2 to π/2। कितने बच्चों को ये ग्राफ समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ देखते ही हमें क्या पता लग रहा है? इज इट कॉन्टिन्यूस फंक्शन? यस, इट इज Yes. कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इज इट डिफरेंशिएबल? No, sir. No, it is not differentiable where at point 0. at x. So we can write, now we write the solution। आप ग्राफ बनाने के बाद अब क्या करोगे? सॉल्यूशन, इसका ग्राफ जरूर बनाना है आपने, ठीक। सो given fx is equal to this, so I can write given fx equal to this। So first point, f of x is equal to mod of sin x is continuous in closed interval -π/2 to π/2। Second, fx is equal to even we can find the derivative f dash x। Okay. What is the derivative of mod sin x? Sin x upon Sin mod. x upon mod of sin sin. x upon mod sin x, और बाद में sin x को फिर से किया तो क्या आया? It is Cos x. cos x। Now this implies that is f dash x is equal to sin x cos x upon mod sin x। क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में डिफरेंशिएबल है? क्या डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है? एक पॉइंट देखो, 0 इसके बीच में आ रहा है ना, -π/2 और π/2 के बीच में 0 भी है। 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी? f dash x की वैल्यू क्या होगी? sin 0 cos 0 upon mod sin 0। So denominator becomes 0, numerator is also become 0, it is in the form of 0/0। Even the derivative does not exist at point x equal to 0। So here x is not equal to 0 because at x equal to 0 derivative does not exist। Therefore this implies that f is not derivable at x equal to 0। This belongs to -π/2 comma π/2।
Therefore, F does not satisfies the conditions of Rolle's theorem in closed interval minus pi by 2 comma pi by 2. Therefore, Rolle's theorem is not applicable is not applicable for this function in given interval. अब आपको क्वेश्चन है, आप इसको सोचना घर में कि किस तरीके से रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती थी इसमें। अगर हम इंटरवल बदलते तो क्या इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती थी? हमें मॉड साइन एक्स का देखो, कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखना है और डिफरेंशियबिलिटी को मेंटेन रखना है। तो अगर मैं इसका इंटरवल 0 से पाई लेता तो देखो ये कॉन्टिन्यूस भी रहता और डिफरेंशिएबल भी रहता, 0 to पाई मॉड साइन एक्स, और f0 और f पाई पे इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती थी। Yes, sir. Yes, sir. और कोई इंटरवल बताओ जहां पर आपको लग रहा है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती थी? minus pi by 2 minus pi by 2 0 Minus pi to 0. माइनस पाई टू 0, वेरी गुड। Zero. और एनी अदर इंटरवल? Sir, 2 pi to minus pi. 2 पाई Minus 2 pi to minus pi. माइनस पाई, हाँ। क्या ये माइनस 2 पाई टू 0 हो सकती है? No, sir. no sir. हाँ, No, sir. फिर नहीं होगी बेटा, क्योंकि उसके बीच में माइनस पाई एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कॉर्नर बनाएगा। माइनस पाई उस पर क्या बना रहा है? कॉर्नर बना रहा है। तो फिर से वहां डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन जो है फेल हो जाएगी। तो आपको एक ही लूप देखनी है उसकी, बस वो जो मर्जी ले लो आप, चाहे पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, माइनस 4 पाई टू माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। जहां उसका कॉर्नर आएगा वहां वो थ्योरम जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब आप लोगों को एक असाइनमेंट है, यू मेक you plot the graph of mod cos x, और फिर चेक करना आपने, ये पॉइंट हो गया। दूसरा चेक करना आपने कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड cos x दिया हो और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, 0 to let it be 2 pi, 0 to 2 pi, is Rolle's theorem applicable for this function? और अगर इंटरवल में दूसरा चेंज कर दूं, x बिलोंग्स टू माइनस पाई कॉमा पाई, तो इस पे चेक करना है। और अगर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 कर दूं क्लोज इंटरवल, तो उस पे चेक करना है। So these are
and try to solve now Lagrange's mean value theorem के question and Cauchy mean value theorem. So now your online class will be on 9th November. आप असाइनमेंट नोट कर लो, इस इन बिटवीन क्या क्या आप असाइनमेंट करोगे. एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपको अदर असाइनमेंट वर्क. फॉर हॉलीडेज. फर्स्ट, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम. आपने स्टेटमेंट एंड प्रूव उसका समझना है और लिखना है. दूसरा, एक्सरसाइज 3C, ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट. ये आपने नोट करनी है एज असाइनमेंट.